another episode of Innovator Baat, and today I have with me Aethrone Aerospace, a startup making India self-reliant in drone, defense, and aerospace technology. With me today I have Suyash Soni, head of sales of Aethrone Aerospace, a startup based out of Pune, incubated at IIT Kanpur, supported under IDEX scheme, and we'll be decoding how difficult or easy it is for startups hustling in defense, a domain which is very niche and early stage, I would say, in India, which got a boom after Make in India campaign, which was run by the government of India, uh, Ministry of Defense putting its new program called IDEX, and startups who were supported under it. How has been the experience? How easy or difficult it is for the innovators to survive in this domain? So, welcome, Shuez. Thank you. To the podcast, and my first question to you would be, what is the technology you guys are working in, and what is that innovation you are putting in? Right. Thank you so much, Rishabh. But thank you to IIT Kanpur and whole SIC team for this whole opportunity. We started back in 2015 in month of June, when two co-founders came together to form this company. And we are working on the IDEX projects, but overall there are multiple things that we are doing to make sure that because government is working on the Atmanirbhar Bharat initiative, we as a company should work on niche technology and make sure that the TOT remains here in India, right? So when we started back in 2015, we started working on the designing and development work, because we found out that there's a very big gap between the user, which is using it, the army, the navy, air force, and the manufacturers that are there. And in between there's a gap because of the requirement, and this requirement doesn't align parallelly with the, let's say there are academias who are researching in particular area, but the same technology is not required by the user side. So where this is the triangle in which the Aethrone Aerospace comes and make sure that we bridge this gap by designing and developing and testing and manufacturing these niche technologies, whether it is required by our forces or the private sector. So, what is that technology, if you can explain it to us, and which army, I mean aerospace, defense, which side you are working in right now? Right. So covering into the drones, aerospace, and defense, why we say it that we work on these three, because there are multiple projects that we do. Starting with the service domain, we work on the designing and development of niche technologies in the aerospace and defense sector. Now, when I talk about the designing and development, there could be a propeller, a rotor blade, a complete designing of structural material of a drone, and even a cowling, right? So there are multiple things that comes in the, let's say there is a part of a helicopter. We worked with the HL recently, HL division, where they were focusing on the indigenization. We worked on two projects of these indigenization, where we focused on the coupling part, right? So the coupling is right there in the helicopter, and they want to indigenize it. Now, right now there is no company in India who's manufacturing it. So we took that project. We started from the designing, developing, prototyping it, and completely testing it to make sure that it is working right. So overall, there is service vertical where we focus on design and development. Then comes our product vertical, where we focus on niche technologies. There are multiple drones who require launcher systems. They do not want these motors to be fitted, these multiple motors, because at the end it becomes a bulk to them. It is an extra weight that they are carrying. So these launcher systems are there for the drones to launch these from a single particular platform to any area. You do not want a flat surface for it. You can place it anywhere and launch it. Now the things comes in, it's not restricted to only drones. There could be targets. Let's say there's a target and you want to hit that target with a explosion. Then you can carry those systems, you can launch those systems from these launcher systems. And these launcher systems varies from 5 kg up till 100 kgs. We have manufactured these and delivered these. Then comes the recovery system, parachute-based recovery system. A drone needs this parachute recovery system to make sure that in the fail-safe, it works as a fail-safe, right? So whenever there is a failure that happens with these drones, when they fly,
I mean, in India, we are talking about drones, right? Each and every day, we hear about the companies who are working on these drones, but we are not also focusing on the safety part, safety of that drone and the people who are, I mean, standing or sitting there, right? So this is where the parachute-based recovery system comes in, And there I think drones are very expensive also. they are, and if you're fitting a camera below it at its belly, it costs you around 3 lakhs to 5 lakhs based on whatever configuration you want, and at the end when it fall from the sky, it damages it, right? So that is where the parachute-based recovery system comes in, because it is not only giving the safety to the person who are sitting or standing below it, but also to this drone system, to make sure that each and every system, the electronics and electrocommunication systems that you have fitted in it, it makes sure that it retrains and doesn't get damaged when it falls. So hearing to your story so far, Right. I can decode that you are trying to create an ecosystem which is not present. Right. When you talk about testing, when you talk about designing, Right. everything is done by the Aethrone Aerospace. Exactly. That gives me a hint that there is some lag Right. still in the ecosystem, and that needs to be developed. So, how has been the transition? Transition we can say from 2015, you were talking 2015 to 2019 of your company. Yeah. Then coming the COVID. Right. Then you are getting the IDEX. Right. You have another vertical of your startup in IIT Kanpur. Right. So how has been that transition for you? For us, back in 2015 when we found it, we started to bridge this gap which I was talking about. After that, in 17, 18 and 19, in this journey, we got quite a few projects from other IITs, where we also worked on the ISRO projects, DRDO projects, where we focused on not only on the drone side, but also on the defense side, because HAL, DRDO, they do not only work on the drones, right? So that journey was very good for us, but parallelly there were multiple problems that we faced. For example, when we wanted to test these drones that we are making for particular company, we faced challenges in terms of the testing, right? Because the drone ecosystem was not opened. The policy that the government came up with in year 2020 and 19, they were not there. So when this COVID came, we in a way we reduced the team size. Because there were no projects, there were no, I mean, whole world was in still, right? So there were no projects, we were not working with any of the company. So after this journey of this COVID, when we were only in a room, we were working, just quite a few people were there. After that, after 2020, when the IDEX came, when the policy for the drone also opened, at that time we focused once again with whatever we were doing, along with it focusing on the niche technologies, because our forces need them. We every day we hear about the Pakistan side, the China side, intruding to our land, right, through Kashmir area, and that is where we need the surveillance, and this is the only one part, and there are multiple areas where the drone needs to be used, right? So that is where after 2022 or 2020, with the IDEX projects, we got two IDEX. We won two IDEX projects. One for the Indian Navy, where we are focusing on a search and rescue drone, and second is the Glidus India Limited project, which is also part of a IDEX only, where we are focusing on a paraglider, and we'll be designing and developing it completely. We know there are multiple problems that we'll be facing in terms of the testing, because in India there's no company who tests the paragliders. We have to travel to some other land and do the testing part. So that is where, from starting from 2015 till 2019, it was one journey for us. After 2020, it was a very big journey for us, because we also got incubated out of IIT Kanpur. That is where another leverage came for us, where we can test some of the technologies here in the labs that are present here. Being from the sales team, we'll be coming to the lab part later. Right. Being from the sales team, Right. I would like to know that since defense is a very niche plus very new market, where the ecosystem I think is not developed fully in India, Right. and your only and sole customer I think is the government agencies.
how you bring in the customer or the projects you were saying, Right. or the work orders you say, Yeah. how is that happening in your company? Well- Where all you are pitching it? Right. So for us, government or these government agencies are not the only customers for us. We have the private players as well, who buy these products that we manufacture, starting from the parachute-based recovery system, launcher systems, advanced composites as well. And when I want to talk about this, government projects. So what we do is there's a process which we have to follow personally. We need to first contact them personally, make them understand that what we are doing. After that we tell them to visit our place, our manufacturing unit, our design unit, to visually see what as a company, as a startup we are doing. And then they take a decision whether a project will be given to us or not, right? And after that there's a complete process that we have to follow. If it is a tender process, then there is a registration and other things that happens. But for example, if it is a IDEX projects, then you have to pitch it. If it is not IDEX, if it is not a tender project, then at the end you what you do is you make an invoice against them, you send them, and at the end it is their decision to take it or not. But in the initial phases we make sure that we pitch rightly, because obviously at the starting point the people do not know us, the officers do not know us. How come they know our product? So what we do is we make sure that not only they know Aethrone Aerospace, but they also understand what we design, how we manufacture, and what is the complete process that we follow. Because we need to make sure that we do not come up in the future, we do not come up only as a startup company, as a MSME, but as one of the companies who make sure that India retains all its TOT and becomes one of the largest at the end, which not only serves the Indian subcontinent but all over world. So the thing you were saying right now, that you make them visit your facility and everything, Right. I think the technology you are working is a very critical technology you are supplying to the Indian Navy, you are supplying to Indian military forces. Exactly. So it's a very critical technology and trust is involved. Right. And I would like to little bit decode that, how you do it, Right. and how are you gaining the trust of these agencies? Right. So it takes a lot of months. Does IIT and- Kanpur's yeah. tag also help you? Yeah, obviously, because IIT Kanpur is one of the institutions here in India who has got its reputation. And when we got incubated out of IIT Kanpur, it was one of the leverage for us, as I said, because when I go out and I say that we are incubated out of IIT Kanpur, there is a trust factor that comes along with it, right? So we are a startup now who is incubated out of IIT Kanpur, who is working in the aerospace and defense sector. And there's not only the product that we are working on, but because we are now incubated out of IIT Kanpur, there's a trust factor comes along with it. And when I talk about the trust with these agencies, what we make sure that we build a relationship with them in a way that we make sure that we are parallelly and continuously in touch with them, tell them what exactly we are doing. If there is a new technology or new drone system that we are working on, right? So for the IDEX one, as I said, we are working on one for the Indian Navy. And let's say we find that there's a one problem statement where we can make a product, a drone system, or it could be anything else as well. What we do is we pitch it along with a PPT, a video, to make them understand how this thing can completely transform this. Now multiple You factors guys are comes acting in. as a Yeah. path barrier, because Exactly. there is nothing existing and you try to विश्वास जीतने की जो बात है, विजुअलाइज करा रहे हो. बिल्कुल उस पर हमारा फोकस काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस के लिए जब भी हम काम करते हैं, हमें मेक श्योर करना रहता है कि हम उनके ट्रस्ट को तो जीते ही जीते, उनको एक और चीज़ का ये अनुभव दिलाएं कि ये कंपनी सिर्फ एक ही चीज़ पे काम नहीं करने वाली. जब हमने उनको एक सॉल्यूशन दिया है, हम एक नए और सॉल्यूशन के साथ आते हैं, उनको पिच करते हैं, क्योंकि हम इस आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है उस पर पूरी तरीके से काम करना चाह रहे हैं. आने वाले 5 सालों में एथ्रोन एरोस्पेस का क्या प्लान है, क्या अपन देखने वाले हैं? राइट. वेल, आने वाले समय में काफ़ी नई चीज़ें होने वाली हैं. आईडेक्स के ये प्रोजेक्ट्स इसी साल कंप्लीट हो जाएंगे. वो हमारे प्रोडक्ट सेगमेंट में एक तरीके से ऐड होंगे.
कुछ जो हमारे GIL और इंडियन नेवी के और एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स और HAL के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो आने वाले समय में कंप्लीट होंगे। वेल ये तो नीचे नीचे की बात होगी। मेन बात आती है क्योंकि अब ये कंपनी अकेले नेशनल कस्टमर्स को डील नहीं करेगी, या साथ में इंटरनेशनल जाएगी आने वाले कुछ समय में। यस, इट इज़ अलाउड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली। अच्छा, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी फोर्सेस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम उनको हमेशा देते रहें, उनकी चीज़ों को। और हमारे, क्योंकि एज एन इंडियन जो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इंटरनेशनली किन से डील कर रहे हैं, किस एरिया में डील कर रहे हैं, उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करके बल्कि उस पर फोकस करते हुए हम इंटरनेशनल जा रहे हैं। और इस चीज़, कई सारे ऐसे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एयरफोर्स नेवी खुद हमसे कहेगी कि बिल्कुल आप उस चीज़ को आगे लेके जाइए। एज अ कंपनी वी ऑल्सो वांट टू एक्सपैंड, राइट। सो क्योंकि हमारे अकेले ये ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं हैं जो सिर्फ हमारी फोर्सेस के लिए हैं, बल्कि हम कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो प्राइवेट कंपनीज के लिए हैं, राइट। सो इसलिए इन प्रोडक्ट्स की तरह, इन सर्विसेज के थ्रू हम इंटरनेशनल जाएंगे और कई सारे न्यू कस्टमर्स को भी टैकल करेंगे, डील करेंगे, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज इंडिया में वो एक ट्रस्ट फैक्टर इंटरनेशनली वो बिल्ड हो चुका है कि इंडियन कंपनीज अकेले वो IT वाली नहीं रही हैं, वो साथ में काम कर, वो डिज़ाइन भी करेंगे, सब कुछ बनाएंगे, वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगी जिसपे सब वो भरोसा रख सके जी। हम उस भरोसे के साथ हम इंटरनेशनल, हम उनको शो करेंगे किस तरीके से हमने बनाया है। और अब मेन चीज़ आती है कि भाई कॉस्ट एक चीज़ आ जाती है, बिकॉज आई डील विद द सेल्स, राइट। कॉस्टिंग एक चीज़ आ जाती है। इंडिया में रह के आपको कॉस्ट की इशू के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा जब आप इंटरनेशनल जा रहे हो जी। साथ में अब ट्रस्ट फैक्टर भी साथ में आ चुका है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के थ्रू गवर्नमेंट ने भी ये शो किया है दुनिया को कि इंडिया की कंपनीज, इंडिया के स्टार्टअप्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो भी आने वाले 5 साल में एक पर्टिकुलर एरिया हमारा ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल भी रहेगा। और ओवरऑल जो हमारी सेल्स ग्रोथ है उसको हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में 10x और 15x, इवन 20x तक खींचें। हैविंग सच बिग एस्पिरेशन और एक डिफेंस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर डोमेन, एग्रीटेक, हेल्थ, जहाँ पे अगर चूँकि ये प्रोडक्ट बेस है तो टाइम लगता ही है, बट डिफेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है जो टिक करता है हमेशा, दैट इज़ कैपिटल। वो अभी तक आपने कैसे मैनेज किया है? चूँकि जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे होंगे, वेदर इट इज़ POC स्टेज, MVP स्टेज, प्रोटोटाइप स्टेज, इस सब जगह कैपिटल लगता है। तो आर यू गाइस स्टिल बूटस्ट्रैप्ड और यू आर मेकिंग रेवेन्यू? हाउ इट इज? So we are bootstrapped obviously, but we are also generating revenue along with it. हम dependent नहीं हैं अकेले ग्रांट्स पे या फंड्स पे। स्टार्टिंग से ही को-फाउंडर्स ने हमेशा से फोकस किया है कि हम एक प्रॉफिटेबल एंटिटी की तरह काम करें। हमें हमारे प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग हमने अपने सारे प्रोडक्ट लाइन्स और सर्विसेज लाइन को ओपन किया, हमारे टीम साइज को ओपन किया। तो स्टार्टिंग से एक इस चीज़ पे हमारे को-फाउंडर की एक लाइन है जो वो हमेशा कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपका जो बेस है वो हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, तब जाके आप ऊपर की इमारत उतनी ऊंची बना सकते हो। अगर आपने बेस को स्ट्रांग नहीं बनाया तो दिक्कत हमेशा होगी। हम वो एक स्टार्टअप की तरह नहीं रहना चाह रहे थे कि जो हर एक अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे उसको फंड की ज़रूरत पड़े। बिकॉज हमने भी सुनी कई सारे स्टार्टअप्स की कहानी, हमने भी अपनी आंखों से देखा किस तरीके से उन्हें इश्यूज होते हैं। तो स्टार्टिंग से ही 2015 से ही हमेशा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस रहा है कि कंपनी बूटस्ट्रैप्ड होने के साथ साथ प्रॉफिटेबल रहे। फंड्स की कभी अगर हमें बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए तो हम उसी तरीके के प्रोजेक्ट्स को उठाएं जहाँ पे हमें जो सामने की एंटिटी है वो भी हमें हेल्प करे। 2015 से लेके 2018, 19, 21, 22 पे जब हम आइडेक्स प्रोजेक्ट्स जीते उस टाइम पे ऑब्वियसली फंड काफ़ी बड़ा था, बट हमें भी गवर्नमेंट ने उस चीज़ का हैंड होल्डिंग दी, क्योंकि आइडेक्स में एक पार्ट होता है जहाँ पे वो आपका आपका जो पूरा फंड है वो आधा फंड खुद गवर्नमेंट आपको देती है माइलस्टोन बेसिस पे, और आधा फंड आपको खुद अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से क्योंकि हमने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया और हमेशा ये नहीं देखा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनके साथ डील करें, हमने मेक श्योर किया कि नए जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ऐड ऑन होते रहें हमारी बकेट में, ताकि एट दी एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट आता है, जो सेल्स का पार्ट आता है, वो एक जगह पे रखा ना रह जाए। कई अलग अलग एरियाज है, बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि ये अकेले एक एग्रीटेक या फिर मेडटेक स्टार्टअप
नहीं है, ये डिफेंस का स्टार्टअप है, ड्रोन्स का स्टार्टअप है। तो स्टार्टिंग से ही आपको इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है कि आपके कई सारे ऐसे एरियाज हों जहाँ से आप ये प्रॉफिटेबल और या सेल्स जनरेट कर सकें। बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए एक जगह भी बैठ के ऑपरेट करना या टीम को होल्ड करके रखना आसान नहीं होता, एंड मैक्सिमम आई थिंक 70% है वो नंबर। Right. और आप अभी 2 जगह ऑपरेट कर रहे हैं, पुणे Right. में भी और आईआईटी कानपुर में भी। तो कितना डिफ़िकल्ट, कितना आसान है वो, और वो कैसे मैनेज कर रहे हो आप? दूसरा, आईआईटी कानपुर से अभी तक आपको क्या सपोर्ट मिला? राइट, तो हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर पुणे में है, उसका नॉर्थ ऑफिस यहाँ आईआईटी कानपुर में है, जहाँ हमारी पूरी टीम के मेंबर्स बैठते हैं। साथ में एक और ऑफिस जो हम हुसूर में आने वाले समय में ओपन करेंगे, इसके पहले भी ओपन किया था। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ और साउथ इंडिया में अवेलेबल रहें। अब आते हैं नॉर्थ ऑफिस पे, यहाँ पे आईआईटी कानपुर, जहाँ पे मैं टीम लीड करता हूँ। बाकी और भी कई सारे मेंबर्स हैं जो हमारे साथ में टीम मेंबर्स हैं जो साथ में यहाँ पे बैठते हैं, जिसमें 2-3 डिज़ाइन डिपार्टमेंट की भी हैं, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की भी हैं। उसको साथ में कोऑर्डिनेट करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि टीम में कोऑर्डिनेशन बना रहे और कम्युनिकेशन कभी ब्रेक ना हो। जब हेडक्वार्टर्स पुणे में है तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो भी प्लानिंग हो रही है, जो भी को फाउंडर्स आगे की प्लानिंग चाह रहे हैं, जो नॉर्थ ऑफिस चाह रहा है, वो पैरेलली अलाइन होके चले। तो वो कम्युनिकेशन जब ब्रिज रहेगा, हमेशा गैप नहीं बनता है, तो उस चीज़ पे हमें फोकस करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब क्योंकि हम आईआईटी कानपुर में मौजूद हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ पे करीबन 1 साल होने को अब आ गया है हमें, तो इधर की हर एक लैब को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ, जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि जब हमें कोई प्रोजेक्ट्स करने हैं, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है, तो किस तरीके से हम उस चीज़ को कर सकते हैं। ये सारी टीम जो यहाँ पे बैठती है, पुणे में बैठती है, ये मेक श्योर करती है कि हमें इस चीज़ की अंदाज़ा हो कि हम पुणे में क्या चीज़ कर सकते हैं और यहाँ आईआईटी कानपुर में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूटिलाइज कर सकें। That was a very insightful talk with you, Suyash, and I think it was the first startup working in defense we had in our podcast. Thank you so much for joining us, and keep watching.